Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a simple pendulum of length of 1 feet suspended from the ceiling of an elevator takes pi by 3 seconds to complete one oscillation. Find the acceleration of the elevator. Fine. So we have an elevator something like this and हमारे पास एक pendulum है. Length of the pendulum is 1 feet and time period of the pendulum is given pi by 3 seconds. So we have to find out the acceleration of this elevator. Let's say ये जो elevator है, it is moving upward with an acceleration a naught. So what will be the time period of this pendulum inside this elevator? Time period will be 2 pi under root of L upon G effective, है ना, जैसे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. G effective की जगह पे क्या आएगा? That will be G plus a naught, right? Inside the elevator, if this elevator is going up with an acceleration a naught, then G effective inside this elevator will be G plus a naught. So just put the values 2 pi under root of L upon G plus a naught, that is time period. Time period is given pi by 3, so इसे pi by 3 put कर दो. So यहाँ से pi से pi cancel, so 1 upon 6 is under root of L divided by G plus a naught. So just square कर देते हैं इस तरह से. So ये होगा 1 upon 36 is equal to L G plus a naught. Now length of the pendulum is 1 feet, है ना. So ये जो G है इसे हम feet per second square में लेंगे, right? So length will be 1 feet. So इस तरह से देखो 36 is equal to G plus a naught and G will be 32 feet per second square. So a naught will be 36 minus 32, that is 4 feet per second square. That is the value of acceleration of this elevator. एंड दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अगर ये जो ए नॉट है ये नेगेटिव आएगा देन जो एक्सेलरेशन होगा एलिवेटर का दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट अभी ए नॉट पॉजिटिव है, इट मीन्स जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है अपवर्ड वो डायरेक्शन सही है. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन. ओके गाइस, कीप वर्किंग आउट. बेस्ट ऑफ लक. बाय.